Hello everyone and welcome back to your one-stop destination for IIT JAM CSIR NET preparation। मैं हूं आप लोगों का दोस्त विपिन कुमार शर्मा और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं PW के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है PW IIT JAM CSIR NET। आज हम इस सेशन में बात कर रहे होंगे हमारी होनहार लाइफ साइंसेज सब्जेक्ट की फैकल्टी से जो आपके IIT JAM BT पेपर में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। IIT JAM is conducted by one of the top institutions, that is Indian Institute of Technology। और इस बार का पेपर भी हर साल की तरह काफी यूनिक, काफी अप्रोचेबल बट काफी टफ होने वाला है। आप इस पेपर को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके अंदर होगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और क्वेश्चंस को बखूबी समझने की क्षमता। उस क्षमता को आपके अंदर जगाने के लिए वी हैव गॉट अ वेरी गुड फैकल्टी पूल जो आज आपसे पूरे के पूरे सिलेबियाई को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस को अप्रोच करना है, कैसे आपको एक एक टॉपिक को समझते हुए आगे बढ़ना है एंड कैसे आपको अपने इस एग्जामिनेशन को भी क्रैक करना है। आई एम रियली ऑनर्ड टुडे कि यहां पर मुझे आप लोगों के सामने पेश करने का मौका मिल रहा है भारत के सबसे होनहार लाइफ साइंसेज फैकल्टीज को। डॉक्टर देवाशीष सर हमारी पहली फैकल्टी हैं जो कि IIT खड़गपुर से पास आउट हैं। ही हैज डन हिज M.Tech एंड हिज PhD फ्रॉम IIT खड़गपुर एंड आफ्टर दैट वी हैव डॉक्टर आशीष जिन्होंने जस्ट अभी अपनी PhD कंप्लीट करी है, डॉक्टरेट कंप्लीट करी है एंड ही हैज टॉट इन अ लॉट ऑफ टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया आल्सो। एंड वी हैव आवर मोस्ट एनर्जेटिक फैकल्टी वैशाली मैम जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है और IIT JAM CSIR जैसे एग्जामिनेशंस को बहुत ही अच्छी रैंक्स के साथ उखाड़ा भी है। आई वांट टू वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आई वांट टू वेलकम ओवर हियर डॉक्टर देवाशीष कर जो कि इस सेशन को आप लोगों के साथ और बेहतर तरीके से शेयर करेंगे बाय शेयरिंग द टॉपिक्स दैट ही विल टीच यू गाइस एंड आफ्टर दैट मोर फैकल्टीज विल ज्वाइन इन टू दिस सेशन जो कि आप लोगों को अपना अपना पार्ट समझाएंगी जिससे कि आप लोगों के साथ एक बॉन्डिंग उनकी एस्टैब्लिश हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे आपको हमारे क्षितिज बैच का विच इज 100% फ्री क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM 2023 उसका उपयोग करना है, इस्तेमाल करना है और अपनी IIT JAM 2023 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। आई वांट टू वेलकम डॉक्टर देवाशीष सर ओवर हियर टू प्लीज फॉरवर्ड विद द सेशन। सर प्लीज। Thank you, Bipin, for your nice introduction about me. Yeah, before I talk about the whole syllabus of life sciences and biotechnology, I'll take you a few other things and I'll tell you what should be your approach regarding the exam and how you should prepare for the exam, right? So, if you look into the syllabus actually consists of 4 things. Even though you will be writing an exam of biotechnology, there will be 4 sections. It starts with biotech. In addition to that, you will have physics, chemistry, and mathematics, right? So we'll come to this part later. Before we talk about the physics, chemistry, and math, let us talk about biotechnology first. In biotechnology, if you look at the whole syllabus, you will see that it covers everything, not only about the genetic engineering or biochemistry, it covers your animal biology, plant biology, evolution, ecology, and everything. Now, you must be thinking that, you will be studying M.Sc biotechnology, then why to study those things again, like the animal biology, plant biology, ecology, and evolution? The reason is that earlier, when the biotechnology, this M.Sc JAM was conducted, only the students who are from BSc biotechnology student, they were eligible to write this exam. But now, anyone from any life science background, that includes BSc Zoology, BSc Botany, BSc Microbiology, or even BSc Biochemistry, any students of life science background, they are all eligible to write this exam. Not only that, many of you will be surprised to know that in addition to students from life science background, the students from physics, chemistry backgrounds also are also eligible to write this exam in M.Sc Biotech. Yes, there are many students who will compete with you. Let's say someone is studying BSc Chemistry. He can switch to M.Sc Biotechnology also. Someone is studying BSc Physics. He can also switch to M.Sc Biotechnology because the subject is like that and it will give you a huge opportunity to talk about research and everything. That is all about the multidisciplinary approach of this subject and that is the beauty of this subject. Okay, so before I take to the whole syllabus, so let me tell you a couple of things because I know there will be different groups of students who will prepare for 1 year, who will prepare for 2 years. And again, there will be some group of students who will prepare for hardly, let's say, 3 months or 6 months or so. But in addition to all this, how we utilize that 3 hours during the exam hall, that ultimately matters. Because the thing is, many of you will not be familiar of writing many mock tests. If you write more mock tests, if you are familiar with the mock test, that will ultimately give you more confidence to write this exam.
Okay, because the more you will be familiar in writing mock test, more you will be having, more you will actually remove the fear of writing the exams, because your nervousness should not be reflected in your exam. अगर ज़्यादा nervous हो गए आप तो एग्जाम में मज़ा नहीं आएगा. हो सकता है कि आपका बहुत सारे प्रिपरेशन हो लास्ट 2 साल का 3 साल का, बट वो जो 180 मिनट्स है दैट मैटर्स एंड दैट एक्चुअली मैटर्स. क्योंकि उस 118 मिनट में क्या होता है, मैं कुछ 2 चीज मैं कुछ सिचुएशन में शेयर करूंगा आपके साथ, देन यू विल गेट टू नो दैट व्हाई दिस थिंग मैटर्स. See, like this exam, there'll be so many other exams. Let's say, for an example, NEET or IIT JAM or anything. There'll be always a single exam which will come with different sets of question paper. Let's say question paper set A, B, C. That means the same questions will be shuffled into 2-3 categories, right? Now, let's say you get a category, let's say set A, that starts with some tough questions. Let's say there'll be another group of category, let's say B, which starts with some easier questions. So the students who will get, the B set, they will be happy because their exams will start with easy questions, right? So their initial 10 minutes, 15 minutes will be happy because they will start with easier questions. Understood? But if you talk about the first set of questions, that may start with tougher questions, right? So you might be anxious that, हमसे तो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मैं तो सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. तो इस सिचुएशन में यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आपका टाइम भी आएगा. हो सकता है कि आपका जो लास्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है वो इजी है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को बस सफल करके 3 सेट में उसको बनाया गया. सो यू शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड दैट यू स्टार्ट योर एग्जाम्स विद डिफिकल्ट क्वेश्चन. सो दैट इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट you should not be disappointed. This is one thing. Second thing, the most important in addition to all those sets, the most important thing is you should not expect of scoring 100 out of 100. That is the most important thing. देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप लास्ट 10 years का जो हाईएस्ट रैंकर है उसका अगर मार्क्स थोड़ा एनालाइज करोगे, देन आपको पता चलेगा कि इफ यू स्कोर 65%, तो प्लीज कोट माई सेंटेंस, इफ यू स्कोर 65% आउट ऑफ 100, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू आईआईटी. सो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिसको मानना है कि हमको आउट ऑफ 100 90 लाना है, out of 100 हमको 95 लाना है. No, this is not possible. Let me tell you very honestly, this is not possible. So the moment you're entering into the exam hall, if you're already prepared in your mind that I have to score more than 90, so with that intention, you will try to solve all the questions, right? Sometimes it will become very, difficult for you because you are dealing with physics, chemistry, math in addition to your own core subjects, right? So you should not keep that in your mind that I have to get more than 90. Because if you keep that intention in your mind, you are putting burden on you. Could you follow me? So that should not be in your mind. As I told you that if you look at the last 10 years, the top rankers, more than 65, if you get more than 65 out of 100, you will definitely get a place into IIT. So if you think, if you realize that, so unnecessarily you will not try to solve all the questions. Otherwise, if you always think, to get into IIT, I have to score more than 90. So with that pressure, you will try to, touch all the questions. So automatically, there will be a lot of negative markings and your ultimate marks will be deducted. This is the second thing. And the third important thing is, see, you are from different parts of life science background. You may be good in geology. You are from, let's say, BSc Geology. You are from BSc Microbiology. You are from BSc Botany. So if you look into your whole syllabus into account, like, whatever you have studied in last 3 years, you must be good in some certain subjects, right? Let's say you are from geology. So I hope you will be good in ecology and evolution. You should be good in animal biology, right? You should be good in molecular biology. So students who are from biotechnology, see, it depends, I'm telling you, but still I'm telling you, if you are from biotechnology, so it will be expected that, you'll be good in biotechnology, you'll be good in research related techniques, you'll be good in biochemistry. So that will be some sort of expectation on you that you will be good in that. But again, it comes with the third category of students who may not be good in any of these disciplines, but ultimately they will become a jack of all trades. Yeah, so that jack of all trades doesn't end with master of none, but if you are really good in handling each and every unit, ultimately that can be accounted and ultimately you will get a good score, right? So that depends on you which category you belong to. Now let us start with the syllabus. If you look into the syllabus, you'll see the biochemistry thing. The biochemistry will carry major weightage in any exam, so whether it is IIT JAM or any life science related subjects. Biochemistry will carry huge value.
So here in biochemistry, basically, if you look into this syllabus, there will be two parts in biochemistry. One is your biomolecules. You'll be dealing with the DNA, RNA, protein, enzymes, and nucleic acids, their chemistry. Another part will be your metabolism, right? So in metabolism, that starts with your carbohydrate metabolism, with glycolysis, TC cycles, and all. And of course, you'll have protein metabolism and other metabolism part. So here, even though something is written here, let's say for an example, let's say Michaelis-Menten kinetics or enzyme inhibition, right? So it is simply written in Michaelis-Menten kinetics. But the beauty of this exam is that when you talk about enzyme kinetics, you have to go beyond this Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation should not be the end of your preparation for IIT JAM when it comes to enzyme kinetics, right? Michaelis-Menten equation should be the beginning of your enzyme kinetics. It should be followed by Lineweaver-Bach plot. That should be followed by, your Hennes and Ohl plot. That should be, followed by Eddy-Hofstee plot. So these are three additional plots in addition to your Michaelis-Menten kinetics. So if you end here, basically your preparation will not be good enough, right? Similarly, if you talk about enzyme inhibition, let's say for an example, here you have to understand how to calculate Ki value, the inhibitor constant, right? So there are some additional informations like how will you deal with the different types of enzyme inhibition that includes, let's say, competitive inhibition, uncompetitive inhibition, and non-competitive inhibition. From the graph, how will you distinguish those things? And you have to deal with minimum two graphs. One is of course your equation, another will be Lineweaver-Bach plot. If not Eddy-Hofstee, or if not Hennes-Ohl, but at least you have to deal with two plots. Okay. Similarly, if you come to this bioenergetics part, this is also another most important thing that is basically merged with your thermodynamics part. Okay, so this part will also give you a lot of questions. Then, as I told you, that will come to metabolism, right? So here you'll have glycolysis, TC cycle. But as I'm telling you again, if you look into this simply title, let's say for an example, glycolysis. So I'm sure many of you will be saying, sir, we have studied enough about glycolysis. But I'll tell you, this single word doesn't mean that, you will complete the syllabus. Now, let me give you some example, then you'll understand to how far you have to take your preparation. Because sometimes, when you write some word in the syllabus, that doesn't actually reflect about how you need to prepare yourself, right? So that I'll tell you how you should prepare yourself. Let's take an example of glycolysis. When you talk about glycolysis, it is not about simply knowing the pathway. I'm sure you are familiar with the glycolytic pathway since your school days, right? You have studied in 9th or 10th standard, maybe you have studied in 11th and 12th standard also. But in glycolysis, particularly when you are preparing for IIT JAM, you have to put more focus on the regulatory part. The three regulatory enzymes, I'm sure most of you are familiar with: phosphofructokinase, right? And you have, your hexokinase, and you have pyruvate kinase. So how those three enzymes are regulated in terms of when you have high concentration of ATP, when you have high concentration of NADH, when you have, bisphosphoglycerate, 2,3-bisphosphoglycerate concentration. So how these substrates and the other, reagents, as I'm telling you, NADH or ATP concentration, how they will regulate the influence of these enzymatic activities, that will actually be counted. Not only that, you will see there are so many glycolytic enzymes which will have direct influence with the, gluconeogenesis pathway also. So that should also be studied here. Similarly, when you talk about TC cycle, how TC cycle is linked with urea cycle, that should be studied. It is not about simply knowing TC cycle, right? And of course, when you are studying TC cycle, you have to study ETC. Even though ETC is not mentioned here, let's say oxidative phosphorylation is mentioned, but ETC, electron transport chain, that is really important, for this kind of examination. So, as I'm telling you, even though this simply the term they have mentioned, but when it comes to the preparation, you have to go to that much detail so that you'll be able to solve many questions, right? Similarly, when you come to biotechnology section, so here, according to the syllabus, it starts with animal cell culture as well as plant cell culture, right? Then I'll take you to their applications in RDT, recombinant DNA technology, in both in agriculture, medicine, and forensic science. Then I'll take you to
one of the most important part of biotechnology, that is methods in biology. This is the part, let me tell you, this will actually reflect the applied biotechnology, the applied biology, right? If you talk about the how to tackle with COVID-19 vaccine, that will come under this methods in biotechnology, okay? Because whether you are dealing with vaccine production, when you are dealing with any other healthcare related products, whether you are trying to express any protein, the therapeutic proteins, for an example, let's say insulin, there are so many other therapeutic products which will be, you will study the techniques, how will you express those proteins in some mammalian system or in some other prokaryotic system, which will be cost effective to deal with healthcare industries, because healthcare industry will have a huge industry, and that will be the coming generation. They will be paying attention, whether it is COVID-19 or whether it is dealing with any other diseases, right? So here we will be dealing with a lot of methods on cell biology, microscopy related study. You have biochemical techniques, UV spectrophotometry, right? So here mainly you will be dealing with Beer-Lambert law, because Beer-Lambert law is very common in almost all the examinations. You will expect questions from there. And of course, the chromatography. The protein purification, the chromatography will give you a plethora of questions, I'm telling you, because from chromatography you will 100% you will get minimum 1-2 questions. That's for sure. And when you talk about chromatography, how can I forget SDS page and Western blot or Northern blot, right? So these are all linked, let me tell you. I cannot skip anything, whether it is Western blot, Northern blot, Southern blot, or agarose gel electrophoresis or SDS page or anything, because each and every technique is highly linked. And this is the part where you will actually get a lot of application based questions. Why this band suddenly appears, why this band suddenly disappears, why you are getting extra one band in addition to your desired band. So many things will come here. Then of course you have molecular biology technique in the form of PCR. So I'm sure since COVID-19 you become more familiar with RT-PCR, right? Yeah. So this PCR, RT-PCR, in fact the expression of clone eukaryotic genes in bacteria, and finally DNA sequencing. In DNA sequencing, we'll start with the classical approach like Sanger dioxide method. We'll talk about pyrosequencing also. We'll talk about Maxam-Gilbert method also. And of course, we'll teach you NGS. Okay, we'll talk about next generation sequence also. Then, molecular biology. If you look into the whole syllabus, and if you look into the the frequency of the questions, you will see molecular biology and biochemistry. Let me tell you very honestly, these are the two pillars of your exam. These are the two pillars. I mean, if I consider the whole questions, let's say 100 questions, right? Out of 100, basically you will get 55 marks from your biology part, and rest 45 marks from your physics, chemistry, and mathematics. So out of 55, the biology part, I'm telling you, the majority will be on the basis of molecular biology and biochemistry. If you are really good in molecular biology and biochemistry, and I assume that irrespective of your background from either from BSc Zoology or BSc Botany or BSc Biochemistry or anything, these two papers like molecular biology and biochemistry, I'm sure you have studied in almost in first semester you have studied with biochemistry, right? If I'm not wrong. And molecular biology you have definitely studied in second semester or in third semester. So irrespective of your life science background, you are all familiar with molecular biology and biochemistry. So that's why you will get maximum questions from both molecular biology as well as biochemistry. Yeah, so please believe me, you have to be really good in molecular biology. If you look into the syllabus here, I'm sorry to tell you that these 3 lines will actually not reflect the depth of molecular biology, because I'm sure you have studied many molecular biology book, right? Whether it is your Watson, whether it is any other molecular biology book, you will see the volume of the book will be more than 1,000 pages, right? But if you look into the IIT JAM syllabus, that is encrypted with hardly 3 lines. So, but the thing is, actually, I was expecting something more should be elaborated here. For an example, let's say they have mentioned, I mean, according to the syllabus, I'm telling you, they have mentioned only DNA replication. They have not mentioned your DNA recombination, right? But DNA recombination should also come under DNA metabolism, isn't it? Similarly, if you talk about RNA, you have the transcription, then you'll have RNA processing. Okay, so here in RNA processing, in many cases, what happens, I'll tell you, in most of the time, students will only study mRNA processing. You have to study RNA processing also, you have to study tRNA processing also. Understood? So when you talk about RNA processing, it is not about only studying mRNA processing. You have to study tRNA processing as well as rRNA processing, right? Similarly, when you talk about regulation of gene expression, the operon system, the most important part is operon system. Operon will give you a lot of questions, let me tell you. And in operon, the another part is there is a fact of inhibition, right?
So that inhibition part of operon you have to study, and we will talk about it definitely. So operon part will give you a lot of questions. We'll deal with lag operon, we'll deal with tryptophan operon. In addition to that, we'll be dealing with arabinose operon also. Okay, because sometimes you may get some questions from arabinose operon also. Okay, and of course the last thing is gene expression in in eukaryotes, right? So everything will come under molecular biology. So that's I'm telling you, if you look into this 3-line syllabus of molecular biology, that will actually not reflect the depth of the subjects, because molecular biology and biochemistry, these are the two pillars. Other things will come in between, but you have to be really good, because majority of the questions will come from these two sections, right? Okay, so that's all. So I hope I'll see you in the class itself, and I am sure that you will be enjoying the whole session, and I'll try my level best to give you updated, and I'll try, and I keep promising that all of you should get into IIT or NIT. So good luck. So I'll welcome Vaishali ma'am to talk about her session. Okay, yeah. Thank you so much, sir. So my strategy, I would say, would be starting with the basics and the concepts. So I will be starting with the concept. आपकी roots से start करेंगे, then we will move to the application portion. क्योंकि अगर हम बात करें तो as you see the pattern of IIT JAM, we have clearly mentioned 3 sections. Section A, Section B, and Section C. Section A has 30 questions. This has 10 and this has 20 questions, where we have these 30 questions as MCQ. Then we have M.Sc, that is multiple select questions, and finally 20 questions will be numericals. So अगर आप ध्यान से देखें, तीनों सेक्शन आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को जज करने वाले हैं. अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, अगर आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको नहीं पता कि आपको कौन कौन से ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, कौन सा करेक्ट आंसर है. न्यूमेरिकल पार्ट दैट इज कंप्लीटली एप्लीकेशन पार्ट. कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स एंड देन मूविंग टू द एप्लीकेशन पार्ट. So this is the 3 units that I will be catering, that is cell biology, microbiology and plant biology. So cell, if we see, that is already stated कि syllabus बहुत concise way में लिखा गया है. और अगर हम बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं एंड डायरेक्टली पूछे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से योर टॉपिक दैट इज सेल साइकिल. इसका क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर से रिपीट हो रहा है एंड ऐसा कुछ नहीं है जो अलग होगा. सिंपली स्टेजेस को सीक्वेंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेस, ये किसके बाद है, ये किसके बाद है, और या फिर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है. सो इट इज द बेसिक, दैट इज क्वेश्चन रिपीट होंगे, टॉपिक्स रिपीट होंगे. एंड इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोबायोलॉजी, एज वी नो दैट इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है. आपको सेल काउंटिंग से अलग अलग जो आपके टेस्ट होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगर हम बात करें प्लांट बायोलॉजी की, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, इसके कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ. लेकिन आपने टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप पढ़ने जाओ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ, आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं पता आप ग्रोथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हो. तो दैट इज वाई the syllabus is very concise and scattered also. कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल रिलेटेड हैं लेकिन फिर भी आगे पीछे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डेवलपमेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखें एंड डिफरेंट डेवलपमेंटल फेसेस देखें, दैट शुड बी, एंड जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग देखें. सो दीज आर वेरी रिलेटेड टॉपिक्स. सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गाइड यू हाउ यू हैव टू टैकल इट. गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो. सो यू डू योर हार्ड वर्क, वी विल गिव यू द गाइडेंस, एंड कंसिस्टेंसी इज द की, एज आई ऑलवेज से. सो इफ यू आर अटेंडिंग आवर लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली, प्लीज, बिकॉज हर एक लेक्चर इस तरह से डिजाइंड है कि एक लेक्चर के कॉन्टिन्यूएशन में जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट वुड बी रिलेटेड. मिसिंग आउट वन विल लीव यू बिहाइंड. So it is very important that you consistently attend our lectures.
and we assure you that we can give you the best guidance on all the online platforms. So thank you so much. So next I would like to invite Dr. Ashish for his part of the syllabus. Thank you so much. थैंक यू वैशाली मैम। जैसा कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो सर लोग और मैम जो है उन्होंने कवर कर दी है। एग्जाम का पैटर्न जो है वो उन्होंने बता दिया है, आपको क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं वो सर ने बता दिए हैं। हम लोग जो साथ में पढ़ने वाले हैं वो मैक्सिमम जो है वो पार्ट है कोर जूलॉजी का पार्ट। उसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से। ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टार्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई और प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बनी और सिंपल लाइफ से कॉम्प्लेक्स लाइफ की फॉर्मेशन कैसे हुई। उस वाले पार्ट को लेते हुए हम लोग जो आगे बचा हुआ पार्ट है इकोलॉजी का उसको कवर करेंगे। और न्यूमेरिकल पार्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट उठता है और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल और हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन हम बोल सकते हैं, वहां से न्यूमेरिकल पार्ट उठता है। तो ये सारा हम लोग कवर करते हुए आएंगे इकोलॉजी की तरफ। तो इकोलॉजी जो है हम बेसिक इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे कि इकोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। उसके बाद हम लोग जाएंगे इकोसिस्टम पे, जैसा कि मेंशन है इसके अंदर बायोटिक एबायोटिक कम्युनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम लोग चलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की तरफ। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से मैंने देखा कि वहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, तो ये वाला पार्ट हम कवर करेंगे। इसके जस्ट बाद हम लोग पार्ट जो कवर करने वाले हैं दैट इज एनिमल बायोलॉजी। और एनिमल बायोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर तीन मेन चीजें दी गई है। एक तो एनिमल फिजियोलॉजी दी गई है, उसके बाद जो पार्ट दिया गया है दैट इज इम्यूनोलॉजी, और इम्यूनोलॉजी के बाद जो पार्ट है दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो ये तीन पार्ट हम लोग कवर करेंगे एनिमल बायोलॉजी वाले पार्ट में। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट आता है जो हम लोग साथ में जो यूनिट करने वाले हैं, ये मेरी लास्ट यूनिट है आपके साथ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंडल से, उसके बाद आगे बढ़ते हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से निकलेंगे जेनेटिक्स से, लाइक जीन मैपिंग। यहां से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और जेनेटिक्स जो पार्ट है वो हम लोग कवर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अपना बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो खत्म होता है। उसके बाद जो फर्दर जो सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथमेटिक्स का, उसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आप बुलाना चाहूंगा डॉक्टर विपिन शर्मा को। सर प्लीज। So thank you Dr. Ashish. I appreciate the efforts of all our life sciences faculties. लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 45% जो सिलेबस होने वाला है वो अदर देन बायोलॉजी होने वाला है, विच इज अ रोड ब्लॉक इन सिलेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी एस्पिरेंट्स। क्योंकि 10th में ही हम लोग मैथ्स को त्याग देते हैं और उसके बाद 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी भरोसा उठ जाता है, तभी हम सोचते हैं कि अपना करियर बायोलॉजी में आगे बनाया जाए। लेकिन अगर आपको IITs में एंटर करना है तो आपको अपने डर का सामना जरूर करना पड़ेगा, और इस डर का सामना कराने के लिए आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अप टू ग्रेजुएशन लेवल। ये सिर्फ कहने के लिए ग्रेजुएशन लेवल की केमिस्ट्री होती है। अगर आप 11th-12th के कंसेप्ट्स को एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज करते हैं, यू कैन इजीली केटर दैट केमिस्ट्री पार्ट। अदर देन दैट अगर आप देखें आपका जो फिजिक्स पोर्शन है ये भी मेजरली, और मैथमेटिक्स पोर्शन है ये भी मेजरली 10th-12th लेवल का ही होता है। बहुत एडवांस क्वेश्चन यहां पे नहीं आते। केमिस्ट्री में हम जो नीट में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बॉन्ड ऑर्डर का आपको एक पर्टिकुलर रेंज सिलेक्ट करना है या फिर कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उस टाइप के नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी नीट और IIT JEE की जो टॉप फैकल्टीज हैं वो आपको यहां पर पढ़ा रही होंगी आपके सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जिससे कि आपकी तैयारी बायोटेक्नोलॉजी की एकदम कोर तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सबसे ज्यादा आपको जहां पे एम्फोसिस करना है दैट इज द बायोलॉजी पार्ट, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट इनटू IIT, काफी लोगों को ये भी लगता है कि सर हम मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते, हम नहीं देखना चाहते उस मनुष्य सब्जेक्ट की शक्ल जिसे हमने 10वीं क्लास में छोड़ दिया था। कोई बात नहीं, इफ यू डोंट वांट टू केटर दैट सब्जेक्ट यू कैन गेट इनटू एन IIT इवन विदाउट मैथमेटिक्स, क्योंकि हम लोगों ने भी पेपर दिया था और उस टाइम पे हमने भी ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं पढ़ी थी। मैंने मैथ्स पढ़नी स्टार्ट करी थी, आई स्टार्टेड विद सेट्स, आई स्टार्टेड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री पे मैंने दम तोड़ दिया था 3rd सब्जेक्ट पे। लेकिन मुझे पता था मेरी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग है और मेरी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही पूरा पेपर निकाल सकता हूं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ने की मुझे कोई खास जरूरत नहीं है, एंड यू कैन फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। इफ यू आर गुड इन मैथ्स, इफ यू आर गुड इन फिजिक्स, पढ़ो यार। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है, बिकॉज हम ऑलरेडी एक ऐसे पायदान पे खड़े हैं जहां 2 महीने बाद हमारे सामने एक पहाड़ जैसा पेपर है, उसको क्रैक करने के लिए द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज मैक्सिमम एफर्ट शुड बी गिवन टू बायोलॉजी सब्जेक्ट, एंड सेकंड बेस्ट एफर्ट्स आपके केमिस्ट्री पे जाने चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें बहुत सारे बायोलॉजी से इंटर रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर।
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके अलावा पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स आप लोग ऑलरेडी बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं. आपको जस्ट एक एक्स्ट्रा इनपुट वहां पे डालना है एंड यू विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबल. हमारी लाइफ साइंसेज की फैकल्टीज तैयार हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एंड आई होप आपके अंदर भी वो ऊर्जा होगी, आपके अंदर भी वो स्पिरिट होगी कि आप डेली बेसिस पे हमारे लेक्चर को देखेंगे, हमारी दी हुई एडवाइजेस को फॉलो करेंगे और आईआईटी जाने के अपने सपने को जरूर साकार करेंगे. आई वांट टू थैंक ऑल द लाइफ साइंसेज फैकल्टीज फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन. एंड केमिस्ट्री फिजिक्स की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसा मैंने आपको बताया, आपके जो सबसे फेवरेट टीचर्स हैं वो आपको यहां पर पढ़ा रहे होंगे, उनके लेक्चर्स आपको यहां पर मिल रहे होंगे. सो वी विल बी केटरिंग एवरी रोड ब्लॉक इन योर आईआईटी जर्नी सो दैट यू कैन गेट इनटू आईआईटी. आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर. आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे ऊपर इतना भरोसा जताने के लिए. आई विल ऑलवेज मेक श्योर कि आपका भरोसा कभी ना टूटे और हमारी फैकल्टीज जी जान से आप लोगों के लिए काम करें जिससे कि आप अपने IIT JAM और CSIR एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएं. वी वुड बी अ कैटलिस्ट इन योर जर्नी टू IITs as well as to CSIR research institutes. Thank you so much everyone. Signing off, this is your friend Vipin Kumar Sharma. Thank you.